Hey there, and welcome back to this video. This is Sohail from Panorama Game Studio, and this is another Unity C Sharp scripting tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं यूनिटी इवेंट्स क्या होते हैं, हम यूनिटी इवेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इवेंट्स फंक्शंस का कंसेप्ट क्या है, ऑटोमेटेड यूनिट इवेंट्स कौन से होते हैं और हम कस्टम इवेंट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, let's remove these things that we have wrote earlier. सो हमने जैसे ही ये स्क्रिप्ट क्रिएट किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और वाइड, ये दो हमारे पास यूनिटी इवेंट फंक्शंस हैं. स्टार्ट, वेन एवर यूनिटी गेम स्टार्ट्स आर लोड्स देन दिस फंक्शन एग्जीक्यूट. हम कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एट द वेरी स्टार्ट, सो हम इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे और ये हमारे पास कॉल हो जाएगा. अगर आपने लेट्स सपोज हम माउस क्लिक करते हैं और उसके एंगेस्ट हम कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम माउस की इनपुट्स को कंसीडर कर देते हैं. लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल. वी हैव कीबोर्ड अटैच्ड टू आवर कंप्यूटर. व्हेन एवर वी प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड देन देयर इज एन इवेंट behind this. We press that key and event just executed. So this is same in the Unity. Whenever we will press buttons in the game, then there is an event behind this. There is a function behind this that gets executed. So in the Unity, start is a default function. हमारे पास स्टार्ट है. इस तरह ऑन इनेबल एंड ऑन डिसेबल के फंक्शंस हैं जो स्क्रिप्ट जब हमारे पास डिसेबल होता है या इनेबल होता है तो हमारे पास कॉल होते हैं. तो एक हमारे पास जो लिंक है मैं ऐड कर दूंगा. यहाँ पर यूनिटी इवेंट्स की सारे हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं, कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है यूनिटी के अंदर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है. ये लिंक मैं ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लाजमी इस लिंक को आपने विजिट करना है. लेट्स सपोज देयर आर इवेंट्स रिलेटेड टू द फिजिक्स. You are going to perform some physics related functions, so you can use like on trigger enter on boolean, something like that. If you are going to input events as we just discussed in the start, we can note the events related to the mouse. जैसे हमारे पास ऑन माउस बटन डाउन है, ऑन माउस बटन अप है, और इस तरह के सारे इवेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं. लेट्स गेट बैक टू द स्क्रिप्ट. हमारे पास ये स्टार्ट का एक फंक्शन है, इवेंट है. हमने इसके अंदर लिखा होता है दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रिप्ट. इसके अंदर हम कुछ और लिख देते हैं. जैसे ही ये हमारे पास कॉल होगा तो ये चल जाएगा. दिस इज द स्टार्ट फंक्शन. ये हमारे पास स्टार्ट फंक्शन है. इसके साथ ही हम और फंक्शन ऐड कर देते हैं. लेट्स रिमूव दैट, वी डिडंट नीड इट. वाइड ऑन इनेबल. सो हमारे पास ये एक यूनिटी का फंक्शन है. जब स्क्रिप्ट इनेबल होगा वी कैन जस्ट राइट दैट प्रिंट. तो इसका सिंटेक्स ये है कि आपने प्रिंट लिखने के बाद दो पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर डबल कोट्स आपने लिखने हैं. लेट्स सपोज इनसाइड ऑन इनेबल हमने इसके अंदर एक सिंपल इंस्ट्रक्शन पास कर दी ऑन इनेबल की. सेम लाइक दैट देयर इज एन अदर प्राइवेट वाइड on disable. These are just the default events. In the further videos we will create our own custom events and we will see how we can use that in our games. But remember that these are the default, these are the automated events that get called in the script whenever something happen. So on disable we just write here a print
and we write here inside on disable. अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मेथड है ऑन इनेबल का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एंड में हमारे पास ऑन यहाँ पर ऑन डिसेबल का फंक्शन है। जब हम फॉर एग्जांपल आवर प्लेयर वी वांट टू रिमूव आवर प्लेयर, वी कैन यूज दैट ऑन डिसेबल थिंग्स लाइक दैट. So this is our small script. Something is inside the start, on enable and on disable. Let's run the Unity editor and check the console. Script is already attached to our game object, so we didn't need to worry about that. So you can see here inside on enable, this is the start function. Because script was already on enable, so we didn't need to worry about that. Whenever we will disable that, and we can see there is a event behind this that is called on disable. If you see the chart here, then you will notice that on enable called first, then start called. See here, first called on enable, then start function executed. This is the order of execution of events. So keep remember these things. On enable called before start. Okay, so see here we have awake. We will awake is also an event that gets called before start and on enable. Reset is something that is called inside the editor. We didn't need to go for that. So these are just the custom events that we use. It's running. If we will enable, then you will see on enable call, start only called once, on disable, on enable and on disable. You can see here it's collapsed and it's working. On enable and on disable is working. So this is something that we used for Unity events. These are the Unity events. Functions these functions are called automatically. So keep remember the syntax for that, on enable and on disable. Let's suppose if we just write here on enable, simple, we just change the syntax. This time this will not call, because we didn't write the correct syntax for that. So let's go into Unity. So this time this shouldn't run, on enable shouldn't work. You see that only start called. So we'll take care of the syntax that is used by the Unity for the default functions. I hope you have enjoyed the video. I am Sohail from Panorama Game Studio. Let's see you in the next video.